learning experiences. 2005 National Curriculum Framework कौन बनी? वही बाहर निकला। ठीक है लिखा है। कितना लिखा है? प्रथम पेज में looking back at experiences. Yes. सब जिनिस अछि किंतु क्लासरूम सिनेरियो रे एतबळे आमे ताकू आनिया पे चाहछे सेटा आनले क्रिएटिव रिफ्लेक्टिव पेडागोजी जो हमें कहते सिमिलरिटी पेडागोजी अल्टरनेटली कोचे ट्रांसफॉर्मिंग मींस कंटीन्यूअसली से पेडागोजिकल सिस्टम रे आमे चलीबा ताकू करी चलीबा ताले हमर ट्रांसफॉर्म हो कोडी लर्निंग अदरवाइज नॉट तेणु से जो जिनस कहती ता भीतर आपण कहले वर्तमान जो जिनस कोन कहले एबे जो दो जिनस कहले आपण रोल प्ले सिमुलेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग के पॉइंट इला एक्सपीरियंस करछि ताको रिफ्लेक्टिवली से चिंता करी नहीं एक्सपीरियंस करछि वो जिनस किंतु रिफ्लेक्टिवली चिंता करिया सुयोग ते दबा ले जाय कि इनोवेटिव पेडागोजी जोटा अप्रोच सेटा फुल हो तो एटा को टिके पेपरटा पूरा क्लियरली सेटा माने लेखला बना हेला चेंजेस हेला ताको टिके आपण जो स्कूल रे जो मेथड बा जो रिफ्लेक्टिव या क्रिएटिव पेडागोजी को फॉलो करछंती ताको नै कि काम करन हैला काम करले कोन सेटा रिसर्च बेस्ड हो मो ए पेडागोजी को फॉलो करली आफ्टर 1 ईयर मोर कौन रिजल्ट है एवं तार इम्प्लिकेशन कौन ता जो बता कि एजुकेशन इम्प्लिकेशन तो मोर रहला हमें जहां काम करूचे तार किछ इंपैक्ट पड़िबा दरकार तो इंपैक्टफुल करबा पे आपण जो पेडागोजी को स्कूल रे फॉलो करूछथि ताको नै कि पेपरटा को मॉडिफाई करू हैला एटी मैडम कथा हम भी ऐड कर सब सर माने सुन पेपर देला पे लिखुचे जदि हम रिसर्च बेस्ड करि परबे वास्तव रे ई सेमिनार रो लक्ष्य होला आपण माने प्रैक्टिकल दैनंदिन जीवन रे जो पढौछन्ती पिला को विभिन्न टेक्निक को कहतली मो कहला बेले विभिन्न टेक्निक अडॉप्ट करछन ता करना सक्सेस पाउछन नै से सक्सेस गुडा नोट कर रखना से गुडा प्रेजेंट करले ए सेमिनार उद्देश्य होचे से ए जो टॉपिक रहला इनोवेटिव पेडागोजी ता आपण जो नुवा ढंग रे कामटी करिवर सक्सेस पाइले दैट इज इनोवेशन सेठी केमति ट्रांसफॉर्मेशन आसिला पिला लर्निंग ता केमति अचीव होला दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन बुझबाइले तो सेही कथाटी को जहा दैनंदिन जीवन रे करिसंती सेहिता देखे सब गुडा आसुची जेते थ्योरी पढोतु जहा अछि एनिबिटर को शेयर कहूची हमें गदा गदा ट्रेनिंग पाउचे सेही जिंसटा हमें कहूचे से हमें लिखि देले इज नॉट सी रिसर्च बुझ पाइले तो जदी सेटा न करिसंती आकु अना ढंग रे मते करि पारि थांते मने कर लुकिंग बैक एट लर्निंग एक्सपीरियंस ए जो लर्निंग एक बा जे कोन सोटे टेक्निक अपन नेबे एसी नेबे नि अपन देखि 10टा पेपर 12टा पेपर हो यदि टेक्निक नै जोड़िए तीनोटी चारटी टेक्निक नहीं सेही टेक्निक रे अन्य को रिसर्चर बा टीचर काम करी की बेनिफिट पाई लिटरेचर रिव्यू कर देबे ताको हेले कंसोलिडेट करतले से ओटे पेपर आइ था दैट इज थीमेटिक पेपर एटा नाइदर थीमेटिक नॉर रिसर्च बेस्ड बुझ पाछन ना नहीं आपण टिके सेही टाइप रे चिंता करत आपन मॉडिफाई करी मैडम ने दिगले सबमिट करो Exactly, that is called action research. That means whatever problem you are finding in your classroom, you have to identify the problem and the solution. It may be tiny problem, you have to identify the problem from your classroom, from your student, from your ICT use, from your administration, whatever problem you identify, immediately what type of solution you can give as a teacher. You do the action research as sir mentioned, you do the action research and present that. That will be your own. We are talking about creativity, innovativeness, but everything you can find, one can type in ChatGPT, they can find also. So what exactly your innovativeness? What exactly your? I have a simple question to you. Can I ask? So what is the basic difference between teaching and reflective teaching?
Have you understand that? What exactly the difference between teaching and reflective teaching? Simple. Your paper is on that only. So think about that. Go to the grassroots level, identify, demarcate a line between a very thin line between that. Teaching, reflective teaching. Then you identify the problem from your student. Then start data collection and find the solution of that particular problem. And that will be a beautiful research paper that can be published also. Right? Thank you. ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏବେଠାରୁ ସେୟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯାହା କାମ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ଏଇ ପିଲାଟା ଦୁର୍ବଳ ଅଛି ଏଇଆ କରିଛି ଆ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଲି ତାକୁ ନୋଟ୍ କରିକି ଡାଇରୀ ରଖୁ ଏଇ ସବୁ ଅକେଜନ ଆସିଲା ବେଳେ ତାକୁ ବେସ୍ କରି ପଢା ଲେଖିକି ସମସ୍ତେ ଦେଖେ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ମୋର୍ ପାୱାରଫୁଲ୍ ପେପର। रामेश्वर बारिक Hello. Respected esteemed dignitaries, my dear teacher friends, and you, the future teachers. I welcome all of you to this seminar. I myself, Rameshwar Barik, Assistant Teacher, Government TP School, Tangarpada, Patna Block, Ponjal. I have a talk on reflective and creative pedagogical strategies. So first abstract, in the contemporary educational landscape, the role of teacher has shifted from mere transmitter of knowledge to facilitator of learning. Reflective and creative pedagogical strategies plays a crucial role in enhancing teaching effectiveness and promoting meaningful learning experiences. Reflection enables teachers to critically examine their instructional practices, while creative encourages innovative approaches that engages learners actively. This seminar paper discusses the concept, significance, types, and classroom applications of reflective and creative pedagogical strategies, highlighting the relevance in improving the quality of education. Education in 21st century, as we know. सर इंट्रोडक्शन आप पढ़ंतु नहीं। Okay, sir. Thank you. ऑब्जेक्टिव कहि रे कोन काम करछन कोन। So now I will discuss about key features. The key features that reflective pedagogy focuses on self-analysis and self-evaluation. Next, encourages critical thinking. Next, it connects theory with real classroom experiences. Actually, what happens, we in ancient strategies, we only focus on theories. What we know, we communicate to our learners. But in reflective strategies, that connects theory with classroom situations. And next, promotes continuous improvement. Okay, the improvement in these strategies is continuous. During learning, before learning, during learning, and after learning, everywhere the students improve himself or herself. When teacher is absent, improvement also occurs. Next. So here is some examples of reflective pedagogical strategies. First, reflective journals. Students or teachers write about what they learn and their difficulties, to which they can produce as a journal. Next. Self-assessment. Learners assess their own work and progress.
peer feedback. Students give feedback to one another. In this way, a student reflects what he learned and what improvement he should do after that. Group discussion. It is also a vital strategies of reflective strategies that when students discuss among them, they know about what they have learned and in which field they can improve themselves. Next. Questioning. Teacher asks reflective questions like why did this method work? So by questioning also it works. Next. Then the most important is portfolio assessment. It was portfolio assessment. Collection of students' work with reflection, and teachers should keep a record of that, which may be used as a reflective tool after that. Next. Then we will discuss about types of reflection. First, reflection on action. About that I was discussing before. Reflection on action. Thinking about a lesson after it has been taught. Then reflection in action. Reflecting and making adjustment during teaching. In some cases, we have to make changes. We have a lesson plan and a mindset that I will teach this and that today, but according to the situation, sometimes we have to make some changes. So that is very crucial, and that is reflection in action. Then reflection for action. Planning future lessons based on past reflections. Reflective practices encourages teachers to become lifelong learners and enhances professional competency. So these are the types of reflections. Then we come to concept of creative pedagogical strategies. Creative pedagogical involves the use of innovative, flexible, and imaginative teaching methods to make learning engaging and meaningful. Now we will discuss about these things. First, innovative, flexible, and imaginative teaching methods. So these are the new methods of teaching. That is, first, we should be innovative and flexible. Flexible means the teacher should not be so hard. The teacher should not think himself or herself that I know everything. So he should be flexible and encourages students to participate actively in his class. Then imaginative teaching. There should be imagination. So basing on real life experience, basing on practical situation, the teacher should encourage students for their imagination. What could happen if if things happen in this way or that way? Then the creativity of students will increase, and this will certainly boost their IQ, and the learning process will also be joyful. Then we should go learn about concept of creative pedagogical strategies. Creative pedagogy involves the use of innovative. So now we will discuss about key features of creative pedagogical strategies. First, learner-centered approach focuses on students' interest, abilities, and learning styles. This is most important. When we are in class, we should keep an eye on what the student needs, what is the interest of students. If we can catch that point, if we know the interest of students, then the class will be interesting. Generally, the students want to learn in a funny, in a creative way. If we teach them, or if we work with them in that way, that will be interesting. And ability and learning styles. Then next is encourages imagination and originality. Promotes new ideas and creative expressions. In our ancient ideas, what happened? The ideas that are written in books, or that idea that has been
booked in the mind of a teacher that he want to upload on the mind of students. Then what happens? Creativity of a student freezes, and that does not help to the students. But in this way, that encourages imaginations and originality. So a student thinks differently. A student thinks in an innovative way. A student thinks in a new way. That's why this method is very much interesting and applicable. Then problem solving oriented. So problem solving oriented learners explores real life problems with multiple solutions. Each and every student has some real life problems. And in creative learning, they accommodate their situation with so much problems that helps him to grow mentally and makes the class and the topic much more interesting. Then active participation. In this strategy, the students actively participate. They gain interest, they gain joy from these strategies. That's why students learn by doing, creating, and experimenting. Next. Then it is much more interesting. Integration of arts and activities. Use drawing, drama, music, storytelling, etc. These are very crucial strategies, crucial methods, because students love to make drama, to draw interesting pictures, to music and storytelling. If we make them learn the topic using these methods, I use these methods particularly drama and storytelling in my classroom situations, and I found that students learn that with much more interest. Flexible learning environment allows freedom to explore ideas without fear of mistake. This is very much important, because when we have some fear, just like I was in a fear situation when I come to here, there was some thunder in my heart. But after that, I am feeling, till now, I am not 100% fear free. I am afraid of if there will be some mistake by me. And that fear will definitely minimizing my capacity and my talk. So student should not be treated like that. There should be fear from out of fear. So it is a teacher who has to create such an environment so that a student should not feel fear while he is doing or he is experimenting something. So first of all, we should not pressurize. We should not impose hard and strict rules on students. That is very much important, because that squeezes the creativity. That squeezes the creativity of learners. We should not behave with the students like that. Next, collaboration and communication. Encourages teamwork and idea sharing. As we know, students, if I ask a student to come here and deliver his speech, then it is a difficult task for him or her. If we let them in a group and allow to speak, then we will find buzzing sound first, then a thunder sound. The whole room will be sounded, because if I ask solitary, a single students to the dice, then there will be fearless. But if we ask them to do things in a group, that will be interesting, and they will act like friends, and good results can come out. Next, so there are some examples of creative pedagogical strategies. First, project-based learning. Students work on creative projects
related to real life situations. Then role play and drama. Learners enact situations to understand concepts better. Storytelling, teaching concepts through stories and narratives. So role play, drama, storytelling, they are very much interesting and educative also. So in our classroom sessions, we should use these techniques much. Then brainstorming, generating multiple ideas freely without immediate judgment. What happens in most of the cases, we judge the students immediately. When the students are doing something, we judge during the things happening. We sometimes we rebuke them. Oh, you do that mistake. Then what happens? That what the student wants to do, he stops that before the end occurs. So he can't express his ideas or his creativity to full extent. So we should not judge the students during the process. We should let him do whatever he wants. Whatever he wants, let him do first. Then no one is fully wrong. So what he is doing, depends on his real life situation or his or her real life situation. So we should let him do what he wants first. Then art integrated learning, using drawing, painting, music or craft to explain concepts. These things also helps to improve, to boost the interest of students, and they learn much more better than traditional methods. Then mind mapping, visual representations of ideas and concepts. Then problem-based learning. Students find innovative solutions to open-ended problems. Okay, sir. Then creative writing, poems, short stories. So next we will discuss about some merits and demerits. Classroom applications, reflective and creative pedagogical strategies can be effectively applied in classrooms through various practices. First, maintaining teaching journals and reflective diaries, peer observation and feedback, project-based and activity-based learning, brainstorming, database and group discussion, use of ICT tools, multimedia and digital resources, integration of art, storytelling and real-life problem solving. These practices creates so finally, these are the strategies, but there are some challenges also when we implicate reflective and. No, challenges is not the right. This is not the right forum to discuss the challenges. Okay, sir. Proper education implication as our classroom. That is all right. Thank you, sir. Thank you. Any question? Any question? First and second, both have perhaps same type of work, but different exams are different. Okay. যদি ଅଛି କା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ପଚାରନ୍ତୁ। ନାଇଁ ତ Exactly, whenever you find of fear, how can you eliminate that? As you are also in that condition, you explain that I am not talking that. Whenever children are in your classroom, they also think that I will fear. What you do to eliminate that fear? Sir, actually, first I encourage them. Okay, first I told them that no one is 100% right or no one is 100% wrong. Even a clock that is out of work shows the time once a day, right? Twice. So, even out of, you should be treated out of any fear, out of any pressure, and I try to mix with my students first. I am not a teacher for them, I am a friend of them. In that way, I work with my students.
So they, when I give them some task, they don't treat like that task. That is a game or that is a something interesting, sir. Now you are in a right track. That means whenever we have thinking or as in my presentation I was talking about that. Our brain having three layers. One is brainstem, one is the amygdala, another one is frontal cortex. So whenever you fear, that amygdala takes the entire brain. That means the control of entire brain is under amygdala. And amygdala works for 13 seconds, only 13 seconds. And that 13 seconds, there are a number of hormones secret. That means norepinephrine, endorphin, cortisol, all that things that makes you tremble. That actually happens, sir. Yes. That happens. So for that, as you have mentioned, one that motivation is one factor. You will keep motivating the students so that their norepinephrine will be converted into the another hormone that is called what is that? Dopamine. That will convert it into dopamine. That's why they feel stress free. Right? First one is motivation. Second one is deep breathing. Whenever the child is having a lot of fear, you just tell them that breathe continuously, take a good breath. Right? Then finger technique. In brain-based learning, we use that. Can you roll your fingers clockwise and anti all the fingers? That three things we use. Also, you can use alpha wave activation music, kick activation music. All that things can be. You have to train the brain. Yes, sir. Yours as well as the students, so that fearness will not be there. Okay, thank Right? you. So, but I enjoy your presentation. You have very systematically you have mentioned the things. So, thank you very much. Thank you, sir. Ma'am, would it take you 1 minute? समस्तଙ୍କୁ नमस्कार। आज मोर प्रेजेंटेशन जो अच्छी सेटा हला पोएट्री एजुकेशन थ्रू एनैक्टमेंट एंड इनोवेटिव आर्ट इंटीग्रेटेड अप्रोच अंडर एनईपी 2020। मोर ना होची मंदाकिनी कर मु स्थानीय जनार्दनपुर गवर्नमेंट यूपी स्कूल रा जने ग्रेजुएट टीचर। ए जो आज जो प्रेजेंटेशन अच्छी अरे टाइटल साइट है हां राइट। मोर प्रेजेंटेशन टी अच्छी पोएट्री एजुकेशन थ्रू एनैक्टमेंट एंड इनोवेटिव आर्ट इंटीग्रेटेड अप्रोच अंडर एनईपी 2020। एठी जो गुडी को मु कवर करी छी से गुडी का प्रथम अछि इंट्रोडक्शन एनईपी 2020 तार रेशनल दुई रे अछि ऑब्जेक्टिव्स रिसर्च क्वेश्चंस थर्ड रे रखी छी मेथड एंड प्रोसेस फोर रे अछि फाइंडिंग्स एंड एनालिसिस फिफ्थ रे अछि रिफ्लेक्शन एंड चैलेंजेस। एई आजि मु जहा प्रेजेंट करिया जाउची एटा मु मोर स्कूल रे ई चैलेंज टी बाय प्रॉब्लम टी फेस करी छी एवं ताकू केमिति सॉल्व करी छी ताकू ही मु आज प्रेजेंट करिया जाउची। सर माने जो माने आज हमर डिग्निटरी जेठी अछंती से माने तांकर जो या पूर्व कहूतिले जे आपण माने निजर क्लासरूम रे जो चैलेंज अछि बा जो प्रॉब्लम अछि ताकू नै कि आपण माने एक्शन रिसर्च करतु। एक्चुअली ताकू ही बेस करिके आज मोर प्रेजेंटेशन enacting poetry integrating art forms into English teaching सर एटा मु पढिया को चाहूची art integrated learning blends artistic expression with academics making learning interactive and engaging using music drama storytelling and visual art. It enhances creativity critical thinking and conceptual understanding while catering to deliver diverse learning styles. आमे जेतेबेले हमर क्लासरूम को जाउछु हमर लर्निंग स्टाइल सबबेले डाइवर्स हेइ थाए तेन करे आमे विभिन्न मेथड
विभिन्न जिनिस यूज करू TLM यूज करू टू एनहांस creativity and critical thinking of the students. Traditional methods often make poetry feel distant and unrelatable, focusing on a rigid analysis rather than personal connection. आपण मैंने समस्त एटा क्लासरूम रे फेस करिथिबे जत्ते बेले हम इंग्लिश पोएट्री बा ओडिया भी से हो बेले बेले हम जत्ते बेले प्रेजेंट करिया को जानती पिला को ताको बुझिया पे हमको कष्ट हो करिया को पड़े एवं पिला विशेष करी कि इंग्लिश पोएट्री बुझिया भी बहुत हैरान हुए एवं आमे ताको रिलेट करि पारंती नाही इंग्लिश पोएट्री से बुझी पारे नाही तेनु करी आमे कोन करबा एटा आज जो पेडागोजिकल इनोवेशन ता मु नेइची बा इनोवेटिव प्रैक्टिस मु करिची एटा होची हमर इंग्लिश पोएट्री पई देखंतु NEP 2020 and AIM NEP 2020 emphasizes competency based and experimental learning आमे जो NEP 2020 कथा कहूछु एटा सब बेले competency based एवं एक्सपेरिमेंटल लर्निंग को एनकरेज करे एवं ताकू सब बेले गुरुत्व दिए सेकेंड हला आर्ट इंटीग्रेशन एनहांसेस कॉम्प्रिहेंशन रिटेंशन एंड एक्सप्रेशन आर्ट इंटीग्रेशन जदि आमे हमर पेडागोजी रे करिबा ताहले एटा कोन करे ना हमर पिल्लार कॉम्प्रिहेंशन को बढ़ाए एवं तार रिटेंशन हुए ता सह तार एक्सप्रेशन को मध्य से बढ़ी थाए बा ठीक भाबरे देखै थाए थर्ड हला एनैक्टमेंट अलाइंस विथ NEP's goal of student centered holistic education more rational hela traditional poetry teaching methods focus on memorization and textual analysis आमे समस्ते ट्रेडिशनल मेथड जानि चंती आमे कोन करंती ना ट्रेडिशनल पोएट्री मेथड कोन थाय ना मेमोराइजेशन ऊपर फोकस करे आमे पिला को ताको मेमोराइज करिया को दो जहर किछि मीनिंग नाही सेथिरे पिलार कॉम्प्रिहेंशन केते रहुची आमे जानि पारंती नाही enactment allows student to embody emotions and narratives deepening comprehension that comprehend आमे तोरे गोटे पोएट्री नबा ताको जदि आमे एनैक्ट करबा ताले सेटा कोन करबो ना तार कॉम्प्रिहेंस को डिपेंड करबो तार से पिला के बुझिला से डीपली ताको बुझी पारबो एनकरेजेस क्रिएटिविटी कोलैबोरेशन एंड सेल्फ एक्सप्रेशन पिला जदि बुझिची तार सेल्फ एक्सप्रेशन ठीक भाबरे से कर पारबो एनकरेजेस स्टूडेंट्स टू लर्न रिदम एंड मीटर ऑब्जेक्टिव मोर जो आज जो पेपर प्रेजेंट होची तार ऑब्जेक्टिव होची इंटीग्रेट enactment into poetry learning enhance students engagement and comprehension third hela analyze the impact on creativity and confidence रिसर्च क्वेश्चंस मु काहे कि एई पेपर टी को नेली एवं या पई कोन सब क्वेश्चन थिला डज एनैक्टमेंट इंप्रूव कॉम्प्रिहेंशन एंड एंगेजमेंट जदी मु एटा गुटी पेडागोजी भाबरे नेली एई पेडागोजी भाबरे नेबा परे सेटा कोन एई क्वेश्चन को मीट करि परिबो डज एनैक्टमेंट इंप्रूव कॉम्प्रिहेंशन एंड एंगेजमेंट सेकंड हैला डज इट बिल्ड कॉन्फिडेंस ऑफ पब्लिक स्पीकिंग ऑफ स्टूडेंट्स एनैक्टमेंट परे गोटे पिलार सेति की कॉन्फिडेंस आसीबो कि से पब्लिकली फियरलेसली स्पीक करि परिबो बा तार ग्लोसोफोबिया रहिबो नाही थर्ड हैला हाउ डज इट अफेक्ट लर्निंग आउटकम्स आमी जो लर्निंग आउटकम क्लासरूम सिचुएशन रे नौचंती बा जो लर्निंग आउटकम को हमें अचीव करिया को जाउचंती से हमरो ए जो मेथड ताको मीट करि परिबो कि सैंपल एंड मेथडोलॉजी जेहेतु एटा मोर प्रैक्टिकल बेस थिला तेन कर मो पिला माने को मो सैंपल भाबरे नेली केस स्टडी ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 जनार्दनपुर गवर्नमेंट यूपी स्कूल जेहेतु क्लास 7 रे मो इंग्लिश पढौची तेन क्लास 7 रो एवरी स्टूडेंट होचनी मोर सैंपल एवं टूल्स कोन यूज होला द क्लासरूम ऑब्जर्वेशन इंटरव्यूज विथ स्टूडेंट्स एंड अदर टीचर्स प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट असेसमेंट दिस आर माय टूल्स methodology process है फर्स्ट है सिलेक्शन ऑफ पोएम रिच इन इमेजिन एंड इमोशंस सब
पोएम गुडी को आमे ड्रामाटाइजेशन करि परिबानी ताको एनाक्टमेंट मेथड रे देखै परिबा नाही सो जते बेले आमे एनाक्टमेंट को जाउचंती सेते बेले आमे कोन करबा वी शुड सिलेक्ट ए पोएम व्हिच इज रिच इन इमेजिनरी एंड इमोशंस सेकेंड है ब्रेकिंग डाउन द पोएम आमे जते पोएम को ताको एनाक्टमेंट करबा ताको आमे भांगी दबा केमिति भांगीबा ब्रेकिंग डाउन द पोएम विथ थीम्स की कैरेक्टर एंड मूड थर्ड है प्लानिंग द एनाक्टमेंट आमे जते एनाक्टमेंट करूचंती एमती इवनली आमे जते एनाक्टमेंट करिया को जानती तार प्री प्लान करंती सो प्लानिंग द एनाक्टमेंट असाइनिंग रोल्स गेस्चर्स एंड एक्सप्रेशंस आमे पिला मानकु ताको सिखेबा जे आमे केमती ए एनाक्टमेंट टी करबा बा ए इमोशन को तुमे केमती भाबरे एनाक्ट करि परिबो केमती भाबरे भल भाबरे देखै परिबो तापरे रिहर्सल करबा को पड़िबो काहे कि ना पिला माने जदि हम ठीक भाबरे ताको रिहर्सल न करबा ठीक भाबरे ताको डायरेक्शन न देबा ताहले से माने आमे जो आउटकम चाहूतिबा सेटा न पाई पारंती सो रिहर्सल इज वेरी इंपोर्टेंट रिफाइनिंग देयर परफॉर्मेंस देन परफॉर्मेंस लाइव एनाक्टमेंट विथ ऑडियंस आमे पिला मानन को एनकरेज करिया पई से मानकर एनाक्टमेंट को अधिक फ्रूटफुल करिया पई वी शुड enact the poem with live enactment with audience they may audience our students माने ही पारंती बा गार्डियंस ही पारंती आमे नेबा देन हमर प्री टेस्ट रे मु जो एनालिसिस करी छी जेहेतु एटा गोटे माने हमर स्कूल रे मु करी छी टूल भाबरे नेई छी तेनु प्रथमे प्री टेस्ट करथली एवं प्री टेस्ट मु देखिली स्टूडेंट्स फाउंड पोएट्री एब्स्ट्रैक्ट एंड डिफिकल्ट प्री टेस्ट रे मु देखिली जे मोर पिला माने पोएट्री इंग्लिश पोएट्री बुझी पारु नाहंती एवं दे फाउंड द स्टूडेंट्स फाउंड पोएट्री एब्स्ट्रैक्ट एंड डिफिकल्ट सेकेंड हैला मिनिमल एंगेजमेंट एंड पार्टिसिपेशन जेते बेले मु पोएट्री पढिया को गली सेते बेले ताकर जो पार्टिसिपेशन बहुत मिनिमम थिला पोस्ट टेस्ट जेते गली सेते मु देखिली जे इंप्रूव्ड कॉम्प्रिहेंशन एंड रिटेंशन सेकेंड है ग्रेटर कॉन्फिडेंस इन पब्लिक स्पीकिंग एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशन एटा है मोर पोस्ट टेस्ट एनालिसिस देन reflections रे enactment makes poetry more engaging and meaningful it encourages self learning and artistic expression it aligns well with NEP 2020's experiential learning goals. So these are my reflections and it is a practical study. There are many challenges. Sir कहले हमें challenge कहबो नाही तथापि टिके खाली कहि दोछि Sir, these are conclusion. Enacting poetry transforms learning from passive to active engagement, aligns with NEP 2020's vision of holistic and experiential education, enhances comprehension, confidence and creativity. Future research can expand to other literacy forms and long-term studies. आमे केवल पोएट्री रे एनाक्टमेंट करिकि देखिछि मु जदि आमे अदर जो आगर अछि माने साहित्य जो अलगा पार्ट गुडी अछि आमे जदि सेहिति मध्ये एनाक्टमेंट को रखिबा बा पिला मन को बुझाय पय एनाक्टमेंट साहाय्य रे चाहिबा आमे मध्ये सेथिरु भलो उत्तम फल पाइबा बली मोर आशा सर these are photo gallery आज जेहेतु एटा गोटे प्रैक्टिकल स्टडी हेतिला तेनु my students thank you madam thank you sir thank you any question from students or participants no question Ma'am, without grammar knowledge can understand the poem and comprehension the question kids understood. Can we achieve specified object without grammar knowledge? Class 5. Sir, आपनकर question के repeat करंतु. Current scenario there is no importance in grammar. My question is without grammar knowledge can understand the poem and comprehension the question and we achieve the specified object of this poem. Who is poem sir? Standard 5. Standard 5 poem. Any poem. Any poem. We can. whether your study is related to grammar
No, sir. It is enactment. So this is the platform. You may put the question. No. You may put the question related to the research. If this, whether she or he, anybody else, may not be proficient in grammar, they cannot correlate the grammar with their techniques. ବୁଝିପାରିଲେ ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମର ଟ୍ରେନିଂ ଫର୍ମ ନୁହେଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜଣେ କାମ କରିଛନ୍ତି ସେ ସେଟାକୁ ଗ୍ରେଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ତମ सर ग्रामर पाई मध्य हमें एनाक्टमेंट को व्यवहार करि परिबा आ क्लास 5 पिलांग पई तो करबा उचित एथि पई जे से माने अति छोट पिला से माने माने हम जो थियोरेटिकल पार्ट रे तांको बा थियोरेटिकली जो पढौ छु सेथिरे से माने एते बेसी बुझी पारंती नाही तनु तांको प्रैक्टिकली हम जत्ते अधिक प्रैक्टिकल जिनिस नै कि बा एनाक्टमेंट थ्रो रे ड्रामाटाइजेशन थ्रो रे जत्ते करबा जत्ते पढी परिबा से माने सेते भलो भाबरे बुझिबे one observation. And you have mentioned that you have selected the poem on the basis of visual imagery and another thing is the emotion, right? Yes. In your pre-test, what you have used to test the student? Whether it's a questionnaire or what exactly you use to test the pre-test? सर प्री-टेस्ट जेतले कली हमर जो ट्रेडिशनल मेथड सर पचाले आपण प्री-टेस्ट केमिति कले As you mentioned emotion, emotion is a psychological construct, right? सर मो प्री टेस्ट एमती कली मो सर से कहि कहू छी जे मु जेतबेले गोटे क्लास को गली मु सर गोटे पोएम लिखली रन 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 7th क्लास रो सेठी मु जेतबेले ताको पढेली पिला मन को जेतबेले पढेली ताको मेमोराइज करिया पे देली किछि पिक्चर कार्ड देखेली एवं जेतबेले मु तांकर टेस्ट करिया को गली जे पिला केते अचीव कले सेथिरे मु देखिली पिला माने एते बेसी सक्सेसफुल हेले नाही बा मु जोटा What you have tested, whether it's the emotion, in that test emotion was there. सर टेस्ट पई मु लेथिली राइटिंग माने किछि लेखिबे मु तांको क्वेश्चन लेथिली क्वेश्चनियर देथिली एवं सेथिरे से माने लेखिथिले एवं से माने जहा कॉम्प्रिहेंड करथिले ताको लेखिथिले मु देखिली से माने विशेष किछि से पोएम रो कॉम्प्रिहेंड करि नाहंती माने सेही जो आपण टूल्स यूज करले असेसमेंट रे टेस्ट कोचोंती ए टेस्ट कोन जिंसटा आपण यूज करि टेस्ट करले सर क्वेश्चनियर That's what I am asking. Means you are around the point, not coming to that point. In the question, say question रे कौन use करे जे जोटा कि emotion का कुछ measure करथो कि जे use करथिले because you have identified the problems that means poems on the basis of emotion and imagery, right? Yes. आमे सर जेतले क्वेश्चन करू सर मु सर रन 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 को नउची मु ताको कहूतिली जे सीट सर गोटे थिला कि बिनीत द स्काई एमती गोटे फ्रेज अछि बिनीत द स्काई मु ताको क्वेश्चन कली जे तुमे नैरेट करा व्हाट इज बिनीत द स्काई सर Have you validated your test tool? यस सर Have you validated your tools? Validate करथिले टेस्ट करिया पूर्व टूल टा हां सर सेटा हमर ट्रेडिशनल टूल सर सेटा हमर ट्रेडिशनल टूल You have used one tool. Have you validated it? Because you need a validated tool. Yes sir. Because when research have you validated it, or this is your tool you have used it as a whole. नो सर मु वैलिडेट करिनी जोटा हमर थिला ट्रेडिशनल टूल ताकू ही मु यूज करथिनी Okay, proceed. Any question? No question? Okay. Madam, your title is very good. Thank you sir. थैंक यू So while we are conducting any research and finalizing the title, focus should be given, the title should be catchy and attractive. You have gone through the format, but Thank the you, sir. format needs a little bit of modification. यस सर The step format means the steps. Okay. Yes. Add some activities. First, मुसारो पाखरु टिके स्टार्ट करिवि सर जोडा कहउथिले टूल select the appropriate tool, whether it may be questionnaire, it may be observation schedule, it may be interview schedule, which tool which is more suitable for the study, that should be finalized.
सर प्लीज मु एठी टूल गुडा को सर मेंशन करिछि Mention question that is you have done the research. You have to tell the tools. You have done the research. Yes, sir. ମୁଁ କହୁଛି କି ଆପଣ ଆପଣ ଏଇ ଟୁଲ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ବୋଲି କହିଲି କି ମୁଁ କଣ କହିଲି ଆପଣ the researcher is independent of free. Yes, sir. He or she can design the tool or use the standardized tool. It is open to you, the researcher. Yes, So suitable tool will be used. Analysis should be not only qualitative, it should be quantitative also. T-test. If you have conducted T-test, post-test, so accordingly you have to analyze. These are my observations. So the paper may be improved and submitted to the principal. Then it will go for publication. So you have to consult with the faculty members along with principal madam and modify it and submit. Thank you, sir. Thank you. Thank you, ma'am. Esteemed Principal, Madam, and honorable guest of this dais, and very eminent persons of this venue and my dear student teachers. Today I am going to explain the presentation phase of seminar of this time. Slide more करके रखो. At first, I convey my best regards to all of you. I am Keshav Chandra Kara from Hatadhi block, Peranopati Upper Primary School, and I am working now under two CRCC, that is Dhenka and Soso. And today's discussion point, that is school-based assessment and feedback. That is the most important topic for me. According to Abdul Kalam, the President of India, former President of India and the scientist, that all the students are the backbone of this country as well as the backbone of this society. And they are the living goddess for us, and we should worship them. That means we have to find out the solution, find out the problems that in each day and in each moment they face the problem in classroom situation as well as in their curricular field. So we have to find out this problem and our duty how to solve this problem, that is the most important for us. So according to this seminar presentation, I have a little bit of story. It's the John's family. John had his wife and two children. School-based assessment and feedback, madam. School-based assessment.
G again. It's the John's family. John's had his wife and 2 children. And John's family are excited to go to a picnic across the Prashant Mahasagar to a deep forest. But John denied to go there because he was unable to buy some tickets for his family members. And he also knows that during winter, some stones, snow stones are in the Prashant Mahasagar. So he denied it. So all the family members asked and angered him, and told, "You are a bad papa. You are a bad papa." But John was very poor man, and he was unable to buy some ship tickets for his family members. So he worked hard, day by day, shift by shift, and earned some money. And with a lot of money, he wanted to buy some ship tickets for his children, and went to the ticket counter of the ship and saw that, and also stood in the row before reaching his position. The ticket counter is closed because all the tickets were sold. Very deeply, he returned to his home and stood in front of his house, and with a deep sadness, he did not know how to understand my family. So all the family members asked me, where are our air tickets? Where are our air tickets? But he did not receive anything because he has no tickets. And also told them the actual thing that had happened in that position. And on that day, the ship had passed away with another people to that point. But on the next morning, a news is recorded that the ship that had passed before one day had crashed with a big snow stone, and some people were dead, and also some people also in danger position. By listening this news, all the family members ran away to the John's room and said, "Sorry, Papa, we are wrong and you are right. Because you know that there is a stone, there will be a stone in winter season in Prashant Mahasagar. Then you told me, God save us, and we were saved." By comparing this position, I have to say something else, that is school-based assessment. How can we find out these problems? That ship is comparable to my school. It's my school gate. And the school is compared to the ship. And the John was the teacher that I am in my classroom, where I understand the knowledge and the experience. John told that to his family, that there will be a stone in Prashant Mahasagar in the winter season. That was the point. So he knows what the problem that he wanted to know. The snow is the barrier for him, barrier for the ship. So it's the comparable position that the teacher is the John. And the problem itself, the snowstone. Because every problem for the children that we have to find in each moment and in each stage, we see
the problems are arised and the students faces in each moment they face the problem. So this is the problem that the ship's problem, that the hurdles, that is the snow stone, it's the problem. And the students, that all the students are comparable to all the people in the ship, because they did not know what to happen in the next phase. We are in an excited moment and we have to go to the picnic place, someone else. But they did not know what will the problem will arise for our next barrier. So that's the best problem that the John find out. So it's the problem for us in our classroom situation. The student faces many problems in their class situation. So we have to find it and encourage them how to solve these problems by varieties of methods, tools and techniques and practice, etc., etc. And the gifted child that John saved to their children. Whereas I have also saved my children with a little bit, and she got the first prize in scholarship. The two students are getting the scholarship during my classroom situation. It's my problem solving method. So, what is continuous school-based assessment? That is the most important thing, that is school-based assessment. So, focus of learning process rather than only final result. We have to find it. That is, for example, we may create quiz assignment during Saturday. That is co-curricular activities in the classroom situation. That may be quiz, assignment, projects, class participation, observation and presentation. We need a little bit for our children because they know nothing and we have to proceed how to solve these problems, and we know what is the method and what is the tool and technique for solve these problems, and we know. So whenever you will be the teacher, then you will find the problem in the classroom situation. That is the most important thing for you. And importance and continuous school-based assessment helps identify learning gaps only. You have to find out the learning gap. What is the learning gap position? And we have to find it. First, it's the first point. And improve student engagement. Whenever any type of students is engaged with your participation, then that class will be the super. And that will be super because there are hal, mal, lal students in every classes. So we have to arrange peer learning, group learning, peer learning. Then we have to find out that problem by solving this problem. Continuous school-based assessment and feedback is powerful approach to improve learning outcomes. It helps students grow gradually, reduces exam pressure, and supports a more interactive student-friendly education system. In every society and in every age, the systems of seminar is evolved according to its need and the temporary times. Thank you again. पचाऊ सर पिला माने कि सर की कोन क्वेश्चन আছে যে স্যার পচাऊ सर ये लैक कला लागी बदला लागी प्रेक्टिकली एंड योर कंटेंट के लैक कला लागी मुझे बुझी पाले नहीं आई थिंक इट्स लैक पेडागोजिकल एंड कंटेंट लैक कला लागी एक्चुअली मु ताको कंपैरेबली नहीं सब दिन एटा गोटे निज थॉट रू मुंदे एटा कंपैरेबल कली जे आ स्कूल बेस्ड असेसमेंट को गोटे थ्रो गोटे स्टोरी रे मु ताको एक्चुअली कंपेयर करिछि
जे हमर प्रॉब्लम टा केतले बाहरिबो प्रॉब्लम टा जानि छथि टीचर जेतेबेले जॉन जानि पारले जे स्नो निहाती थिबो समुद्र रे ड्यूरिंग विंटर निहाती सेतेबेले से मना करले सेतेबेले पे जे तुमे जाओ नाही आउ सीप रे जीवा नाही हम माने जो जगह को हम ठीक हेतला जो बुझी करिया पे जीवा पे चाहिथिले सेठी से जीवा पे मना करथिले दैट माने प्रॉब्लम से जानि थिले से सेहि दिपई आमे मते टीचर आमे मते जानि छथि कोटा प्रॉब्लम को छुआ मानकर कारण प्रत्येक दिन एते छुआ माने से आमे मिसु छथि आमे जानि पड़थि को छुआ कोन तेनो आमे तांकर फाइंड आउट करबा तांकर प्रॉब्लम ता एवं केमितो सॉल्व करबा दैट्स आवर ड्यूटी Actually, sir, that line make me astonished that you say they know nothing, and we the teachers know everything. Actually, that occurred to me. Actually, they know everything, sir. They know better than us. That's my fault. Yes. They know everything. Any question? Sir, I have some observations. Yes, sir. Nicely you have presented. Thank you. That is suitable. But you should modify in the formatting form, in the form. Everybody may be noted while you are writing the paper for publication, for seminar presentation, there must be title, abstract, introduction along with the review of related literature, then rationale of the study or justification of the problem, objectives. If it is research based, hypothesis must be there, delimitation, method, design, population, sample, tools, procedure of data collection or procedure of activity or जो टाइम को होती intervention program. Then post-test, analysis and interpretation, then educational implication. I would take a समस्त कर देखुची there is no reference. Without reference, how can you conduct the research study? Reference must be there. Reference must be APS 7 style. এটা তো ফরম নহে সময় দিব আপনার প্রত্যেক ডায়েট কো এই প্রত্যেক ব্লক কো ডায়েট ফ্যাকাল্টি মানে আটাচ অଛନ୍ତି না নাই APS 7 style American Psychological Association 7 edition 7 মানে 7 edition সেই স্টাইল রে আপন রেফারেন্সটা কো লিখিবে বুঝতে मार देबे गूगल में मार देबे ता फॉर्मेट सब पाइबे एआई रे पके दे पूरा केमति लिखा पळे आसी आपन का पीछे एक्सपेंशन बताया एपीएस 7 स्टाइल देखो 7 में 7 एडिशन अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन बुझ पाले एटा फॉर्मेट ए फॉर्मेट रे आपन आर्टिकल गुडा का सबमिट करी काली स्टेट को पठेबे कि पब्लिकेशन हबो बुक फॉर्मेट को आनिबे तेणु आपन कि सही टाइप रो नआनी बसुदा फॉर्मेट ता पकेबे आपण जो एग्जांपल ला देले पेपर रे एग्जांपल देबे देइछथि ठीक भलो अछि कि ताको हम शॉर्ट कर देबे अल्प करे कहिबे 3 क्वेश्चन केना कहि पारंती 3 क्वेश्चन ऊपर कहि पारंती जहा आपण सुइटेबल करि से 2-3 मिनिट रे कहि देबे मैक्सिमम मिनिट 2 मिनिट आपण एटा प्रेजेंटेशन वाले पळि गला समय नै गले हला आउ लिटिल बिट जहा रहि गला भीतरे ताको वेरीफाई करि रिएक्टिव करि सबमिट करि थैंक यू आ गोटे बड़ कथा होची समस्त को कहली को इंग्लिश कहूची ओडिया कहूची ता कारण कोन because we are not very comfortable in English जेन सर कहले मु भय करूची सर जो भय करूथिले तार नाटा कोन रामेश्वर सर भय छाड़ीबार प्रथम मूलद्वार होची लैंग्वेज
मन रखु जिते आप निजे बा पिला को कंफर्टेबल करते जो लैंग्वेज रे हम कंफर्टेबल से लैंग्वेज कथा कहला से लैंग्वेज प्रेजेंट करला एटा हमें कि उत्तर प्रदेश रे नाही कि जम्मू कश्मीर नाही जे हिंदी हमें जानते इंग्लिश कहया बात ओडिसा रे अच्छे हम डिस्ट्रिक्ट में काम करछे यू आर वेरी कंफर्टेबल इन ओडिया प्रांजल भाव ओडिया रे बुझा प्रेजेंट जीवन थैंक यू नेक्स्ट थैंक यू केशव सर वर्तमान धन्यवाद आज वर्तमान हम पाखरे एडीओ केसर पहुंचे जंदी हमें सर को के वेलकम करियो ए देखी देखी धीरे 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 हम वेलकम कर को मोबाइल हाली दो ए सारे सीरियल kita kecil भाई tambah पढ़ले पढ़े सरी जाउची तेणु आज ही आमे सर्टिफिकेट और बेस्ट पेपर डिक्लेयर करू तेणु आपण माने समस्ते ई जिबे नाही वेट करतु सब सरला पर only title objective your work and educational implication एतिकी टाइटल ऑब्जेक्टिव कहबे Good morning to Good morning to everyone. Myself Kailash Chandra Sethi, assistant teacher Bhakti Malonda, belong to Telpe block. समस्त नमस्कार. मोर टाइटल अछि टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन इन पेडागोजी. Technology integration in pedagogy is like totally transforming the way of learn and teach. It's not just about using digital tools, it's about creating immersive experience that boost engagement, understanding, think flipped classroom, virtual lab, and AI powered adaptive learning platforms. जोटा कि हमरो पिला मानको टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन आमे पेडागोजी रे एया कोइ दउछु दिया जाउची जे आमे जेतबळे क्लासरूम सिचुएशन को जाउचे सेटा हमरो एंगेजमेंट कोलैबोरेशन एवं पर्सनलाइज लर्निंग को एनहांस करिवो ए जिंसटा को बेस करके आ आमे केमिति टेक्नोलॉजी टा को इंटीग्रेशन कर जे पेडागोजी करे दिस इज टेक्नोलॉजी गुडे आमे टेक्नोलॉजी कहले कंप्यूटर इंटरनेट ए जिंस गुडा विशेष करी बुझुते स्मार्टफोन तो आमे सूचना देली सुनलेनी टेक्नोलॉजी कोन तार कांसेप्ट बहुत सुनी सालेनी दिमाग
ଆପଣ ଟାଇଟଲଟା ସହିତ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଏଇଆ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏଇ କାମ କଲି ତାର ଏଜୁକେସନ ଏଇଆ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେଠି ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି 5 ରୁ 6 ମିନିଟ ସାର ଆଜ୍ଞା। ତ ଆମେ କ୍ଲାସरूम सिचुएशन रे एई जिनसटाको आमे टेक्नोलॉजी टाको इम्प्लीमेंटेशन करूछु पिला गोटे सोलार सिस्टम टाको आमे कहूचे जे गोटे सोलार सिस्टम माने सूर्य चारिपटे बुलुचनी ग्रह माने किंतु आमे सोलार टाको टेक्नोलॉजी माध्यम रे आमे पिला मानकु एटी देखै पारुचे आम क्लासरूम सिचुएशन रे हमर ए 21st सेंचुरी रे आमे जोटा कि आमे education is not longer chalk and talk instead of emphasize student centered interactive and technology supported को कम समय भीतर सर्विसेस meaning of technology integration समस्त कहि सारले it is not just about using technology it is but purposefully improve teaching and learning आमे why integration technology काहे कि आमे integration technology को आगे implement करूछंती तार boost engagement रहउची personalized learning रहउची increase accessibility रहउची prepare for the digital age रहउची enhancement collaboration रहउची improve assessment and feedback रहउची pedagogy और technology pedagogy कहले the art and science of technology teaching technology कहले digital tools like computer smartboard internet and mobile apps when pedagogy and technology works together learning become more engaging more interactive and more learner centered objectives of technology integration to enhance students understanding to promote active learning to develop digital literacy to support inclusive education sir आई हमर एजुकेशन खाली कहि दे आज्ञा हमर स्टडी रो आज्ञा कोन व्यवहार करिवे विद्यालय स्तर रे आज्ञा कहि दे लास्ट को दिबो आज्ञा विद्यालय स्तर रे हमें व्यवहार करिछु एई गुडा लर्निंग एक्टिविटी एई गुडा को माने हमें विद्यालय स्तर रे हमें लर्निंग एक्टिविटी गुडा लैंग्वेज ऊपर बुलिंग वर्बल्स एगुडा करि परिबा जूम्स गुडा को हमें करि परिबा गूगल मीट गुडा को हमें पिला मन को गूगल क्लासरूम करूचे तापरे असेसमेंट टूल्स हमें असेसमेंट पाई पिला को काउट क्विज काउट कान्वा आपनकर गूगल फॉर्म्स आ वर्कशॉप एगुडा को हम सब इंप्लीमेंटेशन करि परिबा rules of teacher student and parents एटा दरकार नै सर हमर से करा लास्ट को चला तो पूरा ठीक है सर provision taken by our Odisha government in integration of technology in classroom practices, e-content develop, orientation, tablet, smart board, online platform to orient teacher like Diksha, e-Jadui Pitara, building block apps. Classroom रे आमे एडा मोर निज स्कूल रे मु पिक्चर किछ एडिट करके रखिछि एडी आमे स्मार्ट टीवी रे आमे जादुई पिटारा देखौछे आ एबे मध्ये जादुई पिटारा तार पिटारा स्वतंत्र पेडी विद्यालय को पळे आछि एडी आमे गोटे पिला को देखै परिबा माने स्मार्ट बोर्ड तो जरिया रे माने सब किछि माने करो गोटे केमति हेछि माने सोलार सिस्टम आमे पढौछे सौर दशरे देख पढौछि पिला को हमर टैबलेट माध्यम रे शिक्षा एवं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ओरिएंट टीचर लाइक देखिया एई जिंस गुडा को दिया होछि शिक्षक माने को विद्यालय स्तर रे हम एगुडा करूचे कंक्लूजन हला या टेक्नोलॉजी enriches language pedagogy effective integration improves learning outcomes
Teachers play a key role in meaningful ways. Diet as catalyst for educational transformation. Technology integration in pedagogy is essential for modern education. When used effectively, it transforms traditional classroom into dynamic learning environment. Teachers and institutions must adopt technology thoroughly to prepare students for the future. Thank you, sir. Thank you. And thank you. How through କିଛି question ଯଦି ଅଛି? No questions? Okay. Sir, you have presented and prepared yourself. Thank you again. ଆପଣ ଭଲରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛନ୍ତି ଅନେକ ଇନଫର୍ମେସନ ଅଛି କୁଇଜ କାଉଣ୍ଟ ଭଳି ଆମେ modify the paper using those apps Sir. your activities should be designed and that should be reflected in your paper. Sir. Tell the paper ra hum quality body. Thank you. Thank you. Thank you. मनोज कुमार साहू सर मनोज सर सही कथा काहे कहले ऑब्जेक्टिव कहले कौन काम करिसंती तार शैक्षिक दिग कोन अछि सर्वप्रथम समस्त को नमस्कार. गुड आफ्टरनून टू ऑल. Respected principal madam, all the distinguished guests and my teacher, all CRC and all diet student and all staff. Myself Manoj Kumar Sahu, assistant teacher, PM Sri RK Government High School, Deolia, Telkoi, Keonjhar. More subject अछि reflective and creative pedagogical strategy. 21st century रे ता पूर्वरु सेटा जेतबेला मेथड थिला टीचर सेंट्रिक मेथड. टीचर ता सब बेले को टीचर इटसेल्फ लर्नर होतला किंतु वर्तमान गवर्नमेंट किंबा जे कोनोसी इंस्टीट्यूशन सबरे ट्राई करूची लर्नर सेंट्रिक मेथड करिया पई. लर्नर सेंट्रिक मेथड रे लर्नर इटसेल्फ क्रिएटिविटी तार बढ़िबो, तार रिफ्लेक्टिव बढ़िबो. क्रिएटिविटी कोन बढ़िबो जेतबेला लर्नर क्रिएटिविटी जे कोनोसी दिनस रे ताको गोटे जे कोनोसी दिनस एनी मैटर प्रोवाइड करा जाउची से ता विषय रे क्रिएटिविटी चिंताधारा बढ़िबो. किछि जानिला परे आमे जानिबा जे तार रिफ्लेक्शन हैला. से कहला एजुकेशन 21st century demands more than rote memorization and passive learning. Learners are expected to think critical and active learning. Active learning केते बडा हो जेते बडा learner itself रे creativity हो. Then meaning of a reflective and creative pedagogical strategy. Reflective pedagogy means getting teacher and student to call what he know and what have to done and what to improve. ये जो तीनटा पार्टी मिलेला think about what कौन करिछि, what did not and how to improve. It's about learning through experience and turning action into insight. Then objective है encourage creativity innovation. आमर आज थिला innovation pedagogy. ए innovation pedagogy पई क्रिएटिविटी टा मेन पार्ट. जेतबेले स्टूडेंट जेतबेले क्रिएटिविटी पार्ट को जाउची से कोन करछि ना किछि गोटे मीनिंगफुल लर्निंग हला बोले हम जानूचे. मीनिंगफुल लर्निंग केतबेले बसी जदी किछि सिखिबो, किछि गेम करिवो तो सही कथा एनकरेज क्रिएटिविटी. पिला भीतर क्रिएटिविटी बढ़ाइबा, इनोवेशन स्किल बढ़ाइबा, डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल. गोटे ग्रुप करबा हम जेतबेले क्लास रे पढाइबा, गोटे ग्रुप करि कि ताको मेथड हिसाब रे सॉल्विंग स्किल देबा. तार एनहांस सेल्फ अवेयरनेस and metacognition make learning experimental and meaningful. से लास्ट पेज है लर्निंग टा केमति मीनिंगफुल करा जाय परियो जेते पर्यंत पिलाटी सब जानिबा पे चेष्टा करियो. टूल कोड शेयर जर्नल व्हाट आई लर्न पोस्ट शॉर्ट प्रमोट लर्न रिकॉर्ड सर्वे गूगल फॉर्म. these are the tool of a reflective tool. Then creative tool story based learning, micro mural, online whiteboard, etc. Implementation reflective journal and a diary, project based learning. साथ में
कहूतिले जेतबेले प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग गोटे प्रोजेक्ट करिगिरी जे कोनोसी गोटे सब्जेक्ट किबा टॉपिक दवा देला परे ताकर गोटे ग्रुप फॉर्मेशन हे से गोटे प्रोजेक्ट कला परे समस्तिकर चिंताधारा निश्चित भिन्न ना भिन्न आसीबो तो आमे समस्त कोन गले ना सेठी गोटे सब पिला ताकर निज निजर किछि क्रिएटिविटी रे चिंताधारा ज्ञान कौशल पाइले तो से गुडा प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग बा ग्रुप डिस्कशन डिबेट करबा केस स्टडी करबा किछि जगह पिला को बुलेई नै ता विषय रे डिस्कशन करबा देन डिजिटल टूल लाइक ब्लॉग्स एंड ई पोर्टफोलियो कोन ना जो डिजिटल कंटेंट सब मिलुची सेगुडा को मध्य पिला को शेयर करि परिबा स्ट्रेटजी कोन रिफ्लेक्टिव लर्निंग क्रिएटिव थिंकिंग एंड टेक्निक कोलैबोरेटिव लर्निंग को इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग एक्सपेरिमेंटल लर्निंग देन क्राइटेरिया active learner participation, reflection and self-assessment, creativity and critical thinking, real life relevant. Real life से माने पिला जहाँ real life रे होतुथिबो से माने को सबले करबा continuous feedback पिलाटा सबले केन feedback निजे दउथो continuous चलथिबो तापर useful deep understanding of a concept, increase motivation and engagement पिला सबरे engagement करबा. Then role of a teacher as a facilitator any situation any time teacher make a facilitator set up all things to create rhythm give a short from role of student note after each lesson use the note as the seed of a creativity product a short video simple experiment share work with peers good group रे समान ताकर निज knowledge share करिवे. Then parent role kon hoibo na encouraging a quiet thinking corner at home where kids can jot down idea and doodle तो आमे जेतोले पिलाडा 10 विचार पढौछे तापर छाडी दउछे parent होछ मेन रोल सेटा सेमाने जानिबा दरकार हम पिला कोन पढिछि कोन देव करिवार अछि. then impact improve academic performance ए जो क्रिएटिविटी और रिफ्लेक्टिविटी केडा कोन करबो ना एकेडमिक परफॉर्मेंस पर तार निश्चित गुड criteria ରହିବ enhance creativity and confidence better emotional intelligence develop innovative individual प्रति जनकर individual innovative चिंताधारा को ମଧ୍ୟ बढाई परिबो. conclusion reflective and creative pedagogical strategy play a crucial role in modern education by promoting critical thinking creativity and holistic development despite certain limitations these strategies are essential for quality higher education. Thank you, sir. किसी का भी क्वेश्चन पचारन. Thank you. Kindly you have submitted conclusion. Thank you. Thank you. जा हो जीवा आसवा समय रे चांस जे मिली गला एरा पहिले पदवाची समस्त उच्च पदाधिकारी एवं मोर सहकर्मी बंधुगण एवं श्रद्धेय डायट छात्र छात्रीगण जाऊ एते समय धरिकी शुणिले आशा करछि आ 5 मिनिट शुणी नेबे. तो ये गोटे कथा कहबी जे हमको तो जो रिसर्च पेपर ए बाबद रे किछि जणा नथिला सारंगठो आसिला परे जाहो अनेक किछि जिंस एठी सिखिबा को मिलिलानी अनेक अनेक धन्यवाद सेति मते एठी सिलेक्शन करिकरी डाकी तो जानि नथिलु सेही हिसाब रे प्रिपरेशन करिछु किंतु आपनकर अनुसार ऑब्जेक्टिव्स आ जो प्रकार फॉर्मेट रे कहउछन से प्रकार फॉर्मेट रे हमरो नाही. तो आशा करूची हिजो तो मोर एठी जो टाइटल टी अछि टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन इन पेडागोजी हमर पेडागोजी रे जदी टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन करा जाय हमर केमिति शिक्षाटा अधिक आकर्षणीय ही परिबो हमर से विषय रे हमर ई पेपर टी थिला. मो ना होची प्रशांत कुमार बेहेरा आ ग्रेजुएट टीचर पीएम श्री गवर्नमेंट हाई स्कूल बाउसुड़ी पटना ब्लॉक.
तो वर्तमान आमर जो 21st सेंचुरी आम जो चारिटा चरण जदि करा जाए तार द्वितीय चरण रे वर्तमान पहुंची गलेनी तेणु ए आग को समृद्ध ओडिशा गठन हेबा पई जो स्वप्न आमर सरकार देखुचंती आमे आउ टिके ताको आग को नेबा पई चाहूछु तो सेथि पई टेक्नोलॉजी जदि इंटीग्रेशन करा जाए आमर शिक्षा क्षेत्र रे आमर मेथोडोलॉजी क्षेत्र रे पेडागोजी क्षेत्र रे तबे आमर शिक्षाटा बहुत आग को बढ़ी परिबो या आशा अछि। Education in the 21st century is rapidly changing. So technology plays a vital role in teaching learning process, and primary education is the foundation stage of learning. So integrating technologies in pedagogy makes learning of the students more effective and engaging. हमरा टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेशन करबा पई हेले केवल जे टेक्नोलॉजी जानिले हबनी पेडागोजी जानिया को पड़िबो कंटेंट नॉलेज जानिया को पड़िबो टेक्नोलॉजिकल नॉलेज जानिया को पड़िबो जा फल रे स्टूडेंट मानकर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन हबो जोटा कि हमरा सर प्रथम रो ही कहि सकथले। और टेक्नोलॉजी मीनिंग ऑफ टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन इन पेडागोजी तार मुख्य जिंस ला टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन इन पेडागोजी मीन्स thoughtfully embedding digital tools into teaching learning process to enhance learning, support curriculum goals, and create active student-centered experiences, moving beyond mere substitution to transform instruction for deeper understanding and skill development like problem solving. It also focuses on improving understanding, creativity, and skill. जो टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन इज नॉट जस्ट गैजेट्स यूज ऑफ गैजेट्स बट यूजिंग देम मीनिंगफुली यदि हम मीनिंगफुली ताको यूज न करथि ताले हमर टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन का यदि मेथोडोलॉजी बा ए जो हमर पेडागोजी रे यूज करछे ताहा भलो हबा बदले रे भेलो भी जाई पारे या द्वारा कोन हम हमर की एस्पेक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन इन पेडागोजी या द्वारा enhanceable learning, support curriculum, empower students, blends approaches, focuses on quality. से जिंस बेनिफिट्स कोन कोन हमर पेडागोजी क्षेत्र रे कोन कोन टेक्नोलॉजी हम यूज कर करबा स्मार्ट बोर्ड, टैबलेट एंड कंप्यूटर्स, एजुकेशनल एप्स, ऑडियो विजुअल कंटेंट्स, वीडियो एंड एनिमेशंस, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, QR code based on interactive assessments, 3D models, animation, etc. Examples of technology integration: digital storytelling for language learning, educational games for mathematics, animated videos for science and geography concepts, online quiz and interactive worksheets, visual classrooms and e-learning tools. Practical and effective ways of integrate technology in pedagogy at elementary level. Use technology as a learning aid, not a substitute. हमारा learning रा बड़ा substitute भावरे ताको व्यवहार न करिकी learning हमारा technology को learning पाई use करिबा आवश्यक जेमति कि शॉर्ट एजुकेशनल वीडियो 2-5 मिनिट रा एजुकेशनल वीडियो हमें प्रस्तुत करके ताको इंट्रोड्यूस करू छे एनिमेटेड स्टोरीज जदि एनिमेटेड स्टोरी करके पिला को लैंग्वेज लर्निंग करिया पई दिया जाछि पिला माने भलो करूछथि सेथरे डिजिटल पिक्चर्स एंड डायग्राम्स फॉर TWAU द वर्ल्ड अराउंड अस जोटा नुवा आसुछि हमर बुक EVS एवं साइंस पई example showing of an animation of the water cycle before explaining it गोटे वाटर साइकिल हमें ताको एक्सप्लेन करबा पूर्वरु जदि गोटे एनिमेशन वाटर साइकिल रो एनिमेशन पिला को देखै दिया जे से माने ता विषय अधिक टिके इंटरेस्ट होई पछुंती इंटरैक्टिव टीचिंग टूल्स स्मार्ट बोर्ड एजुकेशनल एप्स क्विज पजल्स जमति कि मैथ गेम ऐप अछि मैथ किड्स खान एकेडमी जियोजेब्रा मॉन्स्टर मैथ इत्यादि इत्यादि ऑडियो विजुअल लर्निंग ऑडियो स्टोरीज टू इंप्रूव लिसनिंग स्किल्स राइम्स एंड सॉन्ग्स फॉर language and memory
recorded explanations for revision. सर सम अप करो अब तो चैलेंज मना करते कहवा तार समाधान करिया हमरो की प्रिंसिपल है टेक्नोलॉजी शुड सपोर्ट लर्निंग नॉट डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम इट. थैंक यू. प्रश्न ଥିଲା କି थैंक यू. शुभ संध्या समस्त को उपस्थित थिबा समस्त टीचर एजुकेटर्स सार्स मैडम्स एंड सीआरसीस एंड स्टूडेंट टीचर्स. Myself Premananda Sethi from Patna. I am working as a teacher in government primary school Musakari. I am also an ex-student of Diet Keonjhar, batch 2017-19, and it is my first presentation. So I am so sorry कि मो इनफॉरमेशन ठीक से पाई पार नथिली कि गोटे रिसर्च पेपर थिला बोली तो सेति मु रिसर्च आकार करने कि मैं केस स्टडी भी करि पारि नाही तो जहाँ प्रेजेंट करछि वो शॉर्ट टाइम रे कंप्लीट करी. तो मोर टॉपिक थिला टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन इन पेडागॉजी. तो इंट्रोडक्शन को बेसी समय नेबिनी. Technology integration is the application of technology to facilitate learning through different mediums, provides opportunity for student-centric learning, engage learners, and allow for differentiation and learning preference. तो हमें समझते डिस्कशन कर सकते टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन सेशन आरंभ रू आज जगन्नाथ सर बहुत क्लियरली समस्त को इंफॉर्मेशन देइछथि कि हाउ टू यूज टेक्नोलॉजी इन क्लासरूम सेशन एंड इन आवर डेली लाइफ आल्सो. तो why do we need technology integration? Enhances engagement and motivation. तो टेक्नोलॉजी इन्वॉल्वमेंट द्वारा पिला मान को जो हमें बोरिंग हो छथि किबा जमे मोटिवेट हेबे, पर्सनलाइजेस लर्निंग, डेवलप फ्यूचर रेडी स्किल, foster collaboration, increases access to resource, improve feedback and assessment, transform teacher and students. तुम विशेष समय नौने तापर रहिছে aspects sustaining integration of technology in teaching learning processes. तो समस्त प्राय एडवांटेजेस वाला डिस्कशन हे सारी मो के डिसएडवांटेजेस वाला डिस्कशन करूची क्षमा चाहिबी. जेमति कि डिस्ट्रैक्शन आमे समस्त टेक्नोलॉजी यूज करछथि डे टू डे लाइफ रे मोबाइल यूज करछथि. जो सार कहउतले कि मोबाइल बिना हमें खाद्य बिना बंची परिबा कि मोबाइल बिना बंची परिबा नाही. हां कि नहीं समस्त को मोबाइल माने सकाळ उठिले आगे मोबाइल फोन मोर कोठी अछि अब कहउछथि. ठीक अछि कि ओके सर. तो मु ए जो टेक्नोलॉजी यूज केमति होउची सेतबे गोटे मो थियरी देछि जोटा टीपैक मॉडल जोटा हम डिस्कशन स्लाइडली करिथिले. टीपैक मॉडल टीपैक कोन टेक्नोलॉजिकल पेडागॉजिकल कंटेंट नॉलेज जोटा कि मिश्रण कहला देथिले 2006 रे नहीं बड़े मिस कॉल अपन टीपैक कोन करो टेक्नोलॉजिकल पेडागॉजिकल कंटेंट नॉलेज. सॉरी मैम टीपैक चैप्टर जाको हेले जे कि टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट हो. ओके थैंक यू मैम. एटी देश तांकर चार्ट लिखि छी जो एरिया टा देखुछन्ते हमें टीके फर्स्ट टीके देखिबा टेक्नोलॉजिकल नॉलेज. तो हमें टेक्नोलॉजिकल नॉलेज पे लोग बहुत भास्ट जिंस समझ रहे हैं. टेक्नोलॉजी हमें माने 100% टू 1% 2% भी हमें जानि छथि कि नहीं.
टेक्नोलॉजी जो यूज करछंती समस्त टीचर कम से कम जानवा दरकार हाउ टू ऑपरेट मोबाइल फोन, हाउ टू ऑपरेट लैपटॉप, हाउ टू मेक ए प्रेजेंटेशन वीडियो, हाउ टू डाउनलोड ए पिक्चर, एंती बेसिक किछि जिंस जोडा हमें जानिले हमें क्लासरूम में सेडा यूज कर परिबा। सेठी होची टेक्नोलॉजिकल नॉलेज। कंटेंट नॉलेज जो जे हमें अच्छा कंटेंट नॉलेज व्हाट यू टीच, हमें कौन पढ़ा में जाउछंती, दैट इज कंटेंट नॉलेज। पेडागोजी कोन हाउ यू टीच, हमें किपरि ताको हम पढ़ेबा, को टेक्निक बा केउ स्ट्रेटजी किबा केउ मेथड रे हमें पढ़ेबा, दैट इज पेडागोजी। जोटा हमें कहउछंती पेडागोजी द साइंस ऑफ टीचिंग। And last one is technology. Technological resources such as computer, software, mobile, internet, समस्त एकरा प्राय जानि छथि। तो क्या बरे एप्लीकेशन में डिस्कस करना चाहिए। सपोज हम गोटे क्लास 7 के 8 रो गोटे चैप्टर पढौछंती डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। तो कांसेप्ट ऑफ साइंस जो हमें लेले सेटा कंटेंट नॉलेज हमर रहिला। तापर हम कोन करे सेकंड स्टेप रे सिलेक्शन ऑफ सुटेबल पेडागोजी। तो हम से कंटेंट को पढाबा पई केउ स्ट्रेटजी किबा केउ मेथड अप्लाई करछंती सेटा होची हमर पेडागोजी। और लास्ट रे रहउची सिलेक्ट बेस्ट टेक्नोलॉजी। तो को टेक्नोलॉजी मीडिया नेले हम से कंटेंट को समस्त पिला को एड्रेस करे परिबा, एडवांसली पढे परिबा, पिला माने समस्त बुझी परिबे, दैट इज टेक्नोलॉजी। थैंक यू। थैंक यू धन्यवाद सर। First of all, I give thanks to all the presenters in both these sessions, because without labor there is no knowledge. You have done a lot. You have collected the information, gathered it, put into your own format and present and develop your courage, participation, everything. So again you are thankful. आमे जेते प्रचेष्टा करिबा हमर लर्निंग ता सेते परिमार्जित हो। मु जेते बेले +2 एडमिशन कली प्रथम साइकोलॉजी सब्जेक्ट नै थिली, एटी से गोटे स्टार पेपर दे दियंती, गोटे मिरर आगे थुआ हबो, आमे मिरर को देखि देखि से स्टार रो मझिरे बुलेइबु पेंसिल रे, थरे बुलेइलु देखिलु केते थरा टच करिछि, पुणी सेकंड टाइम बुलेइबु देखिबु केते थरा टच करिछि, थर्ड टाइम एमिति मोटे टच नकला पर्यंत बुलेइबु। और आज मन अछि प्रथम थर 17 थर बुलेला परे मोर टच फ्री हला। The more we try, the less error we commit, the less trial will be there, more commutation with mistake may be occur. जामे जिते चेष्टा करिबा हमें सेते अधिक लर्निंग करि जिबा। Perhaps this is the first or second time of your participation in seminar? First. So as the first time present here, you have been done the work nicely. This must be encourageable. Having positive attitude, you have developed the work. In this occasion, I want to share some experience with you. Either seminar or publication or action research, everything is research based. Research remains again. Search again and again and again. That is research. ताको हम ओडिया रे कहूचे गवेषणा। एटा मन रखु सदा बेले एवं हमर आपण बंधु मानकु से इन्फॉर्मेशन देबा आर सापड आस करिवेनी आउ के आसीबे आपण से आउ के शामिल हेबा आसीबा पई
एटा खाली प्लेटफॉर्म नुहे एई परिप्रेक्षी रे मो डायरेक्टर प्रिंसिपल एवं तांकर समस्त स्टाफ मान को धन्यवाद देबी जे एभली गोटे डिस्ट्रिक्ट लेवल सेमिनार से आयोजन करते आपण मान को सुझाव दउछथि ए जो छोट छुआ माने बसछथि आसंता काल शिक्षक हेबे ए माने गोटे एक्शन रिसर्च करूछथि कॉपी टू करी एई टू से इंस्पायर हेबे नो वी शुड डू समथिंग आउ कॉपी टू करिमुनी मो कॉलेज रे 48 जन एमए पिला अछथि ए माने गोटे डिसर्टेशन वर्क थाए ए वर्ष मते कष्ट पडुची जदियो अनेक फैकल्टी अछथि माने कष्ट पडुची प्रिंसिपल को कन्विंस कली मो कहली सर मु तीनटा एरिया रे समिति बांटी दोची इंग्लिश पेडागोजी जनरल पेडागोजी आ अदर्स से रिलेटेड 15टा लेखा पिला को दे देची टाइटल डिफरेंट टाइटल सब नहीं एरिया नहीं काम करछथि कोन ना आफ्टर सबमिशन ऑफ देयर डिसर्टेशन तीनटा बही बाहरिबो कॉलेज प्रोडक्ट बाहरिबो मु आपन मैडम सहित से कथा होतली जे आपन मानकर एई पेपर गुडा जदी मॉडिफिकेशन करी करी देई देबे ताले ताकू मध्ये हम प्रोडक्ट हिसाब रे डायरेक्ट पब्लिश कर दबो बुक फॉर्मेट नै आसी दैट इज द एसेट फॉर यू एंड आल्सो फॉर द इंस्टीट्यूशंस एडियो सारे भी अछंती एई भली काम जदी हमें न करिबा हमें रिसर्च बेस्ड टीचर हे परिबा नाही unless and until you develop your interest in research you never think about innovation. What is innovation? Innovation is nothing but it is think something new. That think something new is research. Thought in your mind. तेणु आपणकर रिसर्च होची दुई प्रकार मन रखंतु गोटे क्वालिटेटिव रिसर्च आ गोटे क्वांटिटेटिव रिसर्च क्वालिटेटिव कोन हिस्टोरिकल रिसर्च फिलोसॉफिकल रिसर्च एटा मु कहउतिली आपण माने बढ़िया कलेक्ट करछथि 20 प्रकार टेक्निक लेक्चर एदरो जोडी टेक्निक नियंतु गोटिए टेक्निक नियंतु खाली आपण नेबे रिफ्लेक्टिव स्ट्रेटजी से रिफ्लेक्टिव गोटिए टेक्निक से रिफ्लेक्टिव स्ट्रेटजी रो 20टा एक्टिविटी डिजाइन करिवे 15टा एक्टिविटी डिजाइन करिवे जदि आपण एक्शन रिसर्च बेस्ड करि पाछंती से रिफ्लेक्टिव बेस्ड कोन रिसर्च बेस्ड स्टडी हेची गूगल को पळै जिवे एआई की जिवेनी गूगल को जिवे गूगल रे अनेक स्टडी आपण पाइ जिवे सारा पृथ्वी रे अनेक लोक करिसंती स्टडी से कोन से प्रकार स्टडी करी कोन रिजल्ट पाइ छन ता एनालिसिस करी ता कोडे पेपर बनै देबे सेटा मध्ये ओटे ताको हम थीमेटिकल जो कहूचे सेटा मध्ये ओटे पेपर हेइ जो आपण जदि निजे कले जेन से मैडम करथिले पोएम रिसाइटेशन ऊपर आपण से एक्शन रिसर्च बेस पेपर मध्ये डिजाइन करि परिबे आ सब छोटिया कथा के होउची आपण माने प्रत्येक दिन काम कला बेले जो इनोवेटिव आईडिया नै कि कामटी करूछन ता खाली ओटे डायरी करन नोट करि रखन वर्ष सेशन के सेमिनार समय आसे ताको समूह करिवे गाइडेंस रे डायरेक्ट फैकल्टी मान ताको डेवलप कर देबे डिजाइन कर देबे दैट विल बी वेरी गुड पेपर तण आमे मु ए सेमिनार प्रेजेंटेशन स्टार्ट कली जेतला आपण मान को बलिया प्राइमरी शिक्षक के थिली सेते बेले मु बड़ बड़ इंस्टीट्यूट रे जाई ओडिसा बाहर बीएचयू जाईची पेपर प्रेजेंट करिची आरआई जाईची आंध्र यूनिवर्सिटी जाईची एनसीईआरटी जाईची बड़ बड़ प्लेटफॉर्म पेपर प्रेजेंट हम सब करिछु आपण मान को विशेष दक्षता अछि ए जो कलेक्शन आपण करिछन से रिफ्लेक्ट करूची जे यू हैव दैट कैपेसिटी दैट एबिलिटी यू कैन डू बट interest and positive attitude two things are there आपण माने आहुरी आ गोटे कथा कहबी प्रत्येक सेमिनार गोटे थीम थाए कि सब थीम थाए आपण थीम हैला कोन इनोवेटिव पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग स्टूडेंट्स लर्निंग सब थीम देथिले मैडम आपण घर देखंतु इनोवेटिव टीचिंग प्रैक्टिसेस यूज ऑफ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग आपण खाली आईसीटी ऊपर चलले खाली कलेक्ट करी किंतु आपण माने एवरी डे वी आर डूइंग एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो ना नहीं प्रत्येक दिन आपण काम करूछन एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग ऊपर तापर बहुत कम पेपर आसिला यू शुड डिजाइन योर पेपर्स ऑन दिस समथिंग आर्ट इंटीग्रेटेड पेडागोजी म्यूजिक सॉन्ग गोटे जनकर पीएचडी काम मु करूथिली
ତାଙ୍କର ଥିଲା inculcation of values among the secondary school students through music. Music रे केमती value inculcate करूची से PhD करथिले से आपण मते डिजाइन कर परिबे students learning and assessment को मते आगरे आपण डिवाइड कर देबे preparatory stage, middle stage, secondary stage, multilingual classroom, policy to practice जेमती NEP intervention, समग्र शिक्षा initiatives, PMC schools, action research, case studies, अनेक एरिया सब थीम अछि आपण विभिन्न एरिया रो काम करि पाइथांते मु देखिली मैक्सिमम पेपर एका प्रकार करछ दुई तीन जण लेखा गोटे प्रकार टाइटल नै करछ सो दैट इज नॉट द टाइटल आपण थीम सब थीम के एक्जेक्टली टाइटल करिवे नाही एटा मन रखतो नोट करंतु जेते बेला हम रिसर्च पेपर डिजाइन करूचे डेवलप करूचे थीम सब थीम जहा एक्जेक्ट सेया टाइटल ऑफ द पेपर रहिबो नाही गोटे सब थीम नै के हम 20 प्रकार टाइटल दे पेपर कर परिबा बुझ पाले तो एई सब फीडबैक आपण मान को देबी नेक्स्ट टाइम जेतले प्रस्तुत हेबे टिके आप ध्यान देबे एगो एटा होचे लर्निंग प्लेटफॉर्म ए बोले जेते प्लेटफॉर्म आपण माने पाउछंती उपस्थित रहंतु समय दियंतु शिक्षा प्रयास करंतु ताहले हम शिक्षकता जीवन सार्थक करि जीव धन्यवाद समस्त को देबी ऑर्गेनाइजर मानन देबी एजीओ सर को देबी मते सुजोग दे एते दूर मु आसी आपण मानन सहित किछि मोर अनुभूति शेयर करि पाथिबार से सुजोग प्रिंसिपल मैडम दैछंती तांको मध्ये अशेष धन्यवाद मोडी प्रभु जगन्नाथ पाखरे आपण मकर ए अनुष्ठान रा उत्तरोत्तर मंगल कामना करी मु मोर बाणी को विराम देउची जय जगन्नाथ जय भारत माता जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय माता रानी जय माता रानी I request Rudra sir to say some valuable words with our participant, presenter, and our pre-service student teachers. धन्यवाद जय जगन्नाथ ये सेमिनार कार्यक्रम रे उपस्थित डायरेक्टर प्रिंसिपल महोदया मो पाखे अछंती राजधानी कॉलेज रा प्रोफेसर महोदय डायरेक्टर समस्त फैकल्टीज सामने समस्त बसंती आम स्कूल मास एजुकेशन विद्यालय अंतर्गत शिक्षक शिक्षयित्री एवं यही डाइट रो समस्त स्टूडेंट्स जो मान भविष्य शिक्षक हेबे समस्त को मो तरफ शुभेच्छा शुभकामना बहुत सुंदर कार्यक्रम वर्तमान चली शेष पर्यायर मु योगदान कली मैडम अनुरोध करते मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद डाइट बहुत बहुत धन्यवाद डाइट फैमिली को समस्त टीचर्स जो मैंने आम आसिकी पार्टिसिपेंट थे सेमिनार दौले प्रेजेंट करुले समस्त को अभिनंदन बहुत सुंदर भाव से प्रेजेंट करुले शिखिबार कथा सार तांकर अनुभूति बहुत ही भल कथा कहते मन छुआ कथा भावुचे आपण मैंने समस्त शुणवे शुणवे मन रखिए काम लगे आपण मैंने अन्य शिक्षक मान किसी आगे रही किसी पाद आगे निहत भाव ताहा स्वीकार्य और यही जो मनोवृत्ति जारी रखु आपण मैंने समस्ते शिखिबार मनोवृत्ति रखिए हार्डवर्क करेंगे सार जमी कहते आटीट्यूड आमको रखा पड़ो पॉजिटिव आटीट्यूड रखा परिश्रम करवा कारण आमको एपटे प्रोफेशनल स्कूल रे पाठ पढ़ा साथ आमर पर्सनल डेवलपमेंट जो जिन आप सीमित रही ना मोर आपण रिक्वेस्ट बहुत भल कार्यक्रम आप बाछी सेमिनार कर बहुत सब बहुत भल लगे सब कार्यक्रम गुड़ाक तो आपण मैंने शिखिबार आटीट्यूड रखिए कदापि बंद करेंगे ना आदि सार कहते मुझे जिन एकमत आपण मैंने प्रेजेंटेशन जो करुछंती भविष्य में केवल थियोरेटिकल एस्पेक्ट को गुरुत्व न दे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जेहेतु आपण मैंने शिक्षकता वृत्ति रे अछंती शिक्षकता कार्यक्रम करुछंती कौन कौन आपन अचीवमेंट हेछि जो थियोरी गुडा आपण पढुछंती ताकू टी कोरिलेट करिवे जे हां एई जिंस गुडा ए टेक्नोलॉजी हम यूज करछु एटा हमर अचीवमेंट मिलछि स्कूल माने करे ताकू भाबुछि
प्रेजेंट कले बहुत भल हम आपणकर जो भल कथा कहते रिसर्च कथा कहते जे टेम्पलेट केमती हवा दरकार लिटरेचर स्टडी कथा कहते वास्तविक जो रिसर्च कैरियर करती से बाट देकी जाती तो आपण मैंने करूँ सेल्फ साटिस्फैक्शन लगे निहती भाव में आपणकर कह कथा जे एत सब जिन जाचे कि सबकि सरकार तरफ व्यवस्था कराई विद्यालय मानक बहुत इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है बहुत पुंजी विनिवेश होता सत्वे लर्निंग आउटकम आशानुरूप बढ़ी पारना वृद्धि होना आमको ध्यान देवा पड़ो से रोड लर्निंग जुग ना बर्तमान आमर कनसेप्ट लर्निंग व्यवस्था कराई आज माननीय शिक्षा मंत्री केंद्र शिक्षा मंत्री और आम राज्य शिक्षा मंत्री से कार्यक्रम आम समस्त उद्बोधन दौते नुआ जो बही आसूची टेक्स्ट बुक्स नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एवं ओडिशा स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क स्कूल एजुकेशन ताको बेस कर जो कंटेक्चुअलाइज कराई 55 खंड बही नुआ भाव में आसूची प्रथम ठू अष्टम श्रेणी आपण माध्यम से आम सब व्यापक करवा समस्त जाना दरकार खूब शीघ्र टीचर्स मानक ट्रेनिंग व्यवस्था हम फेब्रुआरी 15 भर तेणु जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो उद्देश्य रही निहत भाव आम माध्यम आम सफलता दे पारिबा से एक्सपीरियंशियल लर्निंग कथा कह बहुत कथा कहते प्रॉब्लम सॉल्विंग कथा कहतु क्रिटिकल थिंकिंग कथा कहतु से एटीट्यूड कथा एक्सपोजर कथा तेणु से आम निहत भाव में होलिस्टिक डेवलपमेंट केमती पिलामानकर हो पारिबो ताकू दृष्टि रखिकी आम टिके आमर कार्य क्षेत्र में आम इनोवेटिव मेथड अप्लाई जो पेडागोजी कथा कह बहुत पेडागोजी अच्छी तेणु आम से कौटा आम पिला क्षेत्र में लागू करवा कौ पिला कौ भाई अच्छा कारण इंडिविजुअल डिफरेन्स अच्छी तेणु कहाँपाई कौ मेथड में पाठ पढ़े से शिखिपार कि बुझीपार तर आग्रह बढ़ो से जिसटा को आमको टे चिंतन करा पड़ो ताहले जाकि पिला पाखे पहुँच पारा तेणु आपण मैंने आपण क्षेत्र में किसी ना किसी भल काम करूँ एवं आपण किसी इनोवेटिव चिंता करूँ आप जो जो विद्यालय आसछंती जो ट्रस्ट आसछंती आपण किसी चिंता करूँ अनुमान को मोटिवेट करूँ जमती कि आम जो स्तर में अच्छे जो शिक्षार जो स्तर में अच्छे ताकि आहरी आगे बढ़ी पारिबा आउ केंद्र शिक्षा मंत्री तो बहुत गुड़े दायित्व आज देइछंती आम ओडिशा को जे आम केमती ओडिया शिक्षाटा को आम आहरी अधिक बढ़ेबा गुरुत्व देबा साथे एफएलएन बा निपुण ओडिशा सेटा को केमती आहरी अधिक व्यापक करबा सेते केमती अधिक आमर माने जो लेवल टाको बढ़ेबा सेते मध्ये हम टारगेट देइछंती साथे न्यूट्रिशन कथा मध्ये कहछंती जे स्वास्थ्य ही केमती बहुत गुरुत्वपूर्ण न्यूट्रिशन एस्पेक्ट सेति मध्ये हम किछ काम करिया पड़िबो एभली भाव में बहुत किछि आमे ताको ध्यान देबा तेणु समस्त टीम स्पिरिट रे ही आमर शिक्षा क्षेत्र में आम व्यापक माने उन्नति आनी पारिबा एवं डायट एभली कार्यक्रम संपादित कर ऑर्गेनाइज कर डायट फैकल्टी मान को डायट समस्त आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करछि एवं समस्त उत्तरोत्तर मंगल कामना करी मो वक्तव्य शेष करछि धन्यवाद। भितर जो टाइम रहा आपको गाइड कर फाइनल करदेबा फाइनल कला से पेपर भुवनेश्वर में आरआई कि एससीईआरटी रे प्रेजेंटेशन हम से दुईटा पेपर को पब्लिश करेंगे थ्रू एससीईआरटी ये इनफॉरमेशन बाकी जो कथा गुड़ाक सार कहले रिसोर्स पर्सन अजय सार कहले सार कहले सार कुमार सार कहते कथा प्रथम आम सब कहते गोटे सुजोग से पिला हो टीचर हो गोटे सुजोग इज वेरी इंपोर्टेंट अपॉर्चुनिटी मिले आम एक्सप्लोर करवा स्टार्ट करते यू आर वेरी फॉर्चुनेट कि आप मैंने आज आसी पहुंची एटी आसिला परे आपन निहाती पॉजिटिव माइंडसेट अछि नहले आपन धैर्य सहित ए समय एटी बसी पारि नथान जेतु पॉजिटिव माइंडसेट अछि ता आगम कंटिन्यू करिवो हम समस्त आशा सेटा आपण माने स्वीकार करछथि तो एटी के आसिला परे किछि लर्निंग जोटा हम कुछ किछि ट्रांसफॉर्मिंग हेइ छै लर्निंग रे बहुत बहुत धन्यवाद आमे से सुजगटा सृष्टि परिचय सेति पई जो जय जगन्नाथ का पाखरे हमें नतमस्तक
को होचु कारण से सब सुजोग सृष्टि करती अल्टीमेटली तेणु जहाँ हो आपण मैंने से अपॉर्चुनिटी पाइले मु भाबुची निश्चित भाव में जो मैंने फर्स्ट प्रेजेंट करछथि बा सेकंड टाइम प्रेजेंट करछथि निश्चित भाव में किछि लर्निंग करथिबे ए प्लेटफॉर्म गोटे लर्निंग प्लेटफॉर्म आपण माने कठो आमे किछि सिखिबा कारण जेतु फील्ड लेवल रे आपण माने समस्त सेठी एक्सप्लोर करछथि आमे ऊपर लेवल रे रहिलु तेणु बोथ नॉलेज शेयरिंग बोथ एक्टिविटी शेयरिंग हेले जाय कि आमे एजुकेशन को ऊपर को नै करिवा तो सही सुजोगटी आज जो सुजोगटी सृष्टि हेछि ताकू फील्ड लेवल रे आपण माने कार्य करंतु जेंति कहले एक्टिविटी जो एक्टिविटी आपण डे बेसिस रे प्रतिदिन करूछंती ताकू नोट डाउन करंतु ताकू नै कि आपण सेल्फ प्रेजेंटेशन करंतु जेटा कि वेरी फ्रूटफुल हो आ समस्त ताकू कोन करबे ना ताकू एडमायर करबे आ जेटा मध्ये स्टेट लेवल को सिलेक्ट हे कि जाय परिबो तो वर्तमान समस्त को अवार्ड करबा कला परे गोटे फोटो सेशन हम समस्त आम लाफी महोदय एडीओ सार आम समस्त फैकल्टी मेंबर मान सहित फोटो सेशन करवा ता पूर्व आम धन्यवाद रिक्वेस्ट करी सरस्वती पंडा मैडम को से आनुष्ठानिक भाव समस्त को धन्यवाद देवे सर्टिफिकेट सेरेमनी पर धन्यवाद अर्पण करेंगे आम फोटो सेशन धन्यवाद समस्त प्रेजेंट जो माने जो माने हार्ड कॉपी देना थी से मैंने सबमिट कर देबे शुभ संध्या तो बेस्ट वीडियो डिक्लेयर करिया पूर्व आमे जो माने प्रेजेंटेशन करछन पेपर ताको अनुरोध करिबा से माने आगे सर्टिफिकेट ग्रहण करिवे तो सर्टिफिकेट दबा पाई मु एडीओ सर को मैडम को और अजय सर को रिक्वेस्ट करिवे सर्टिफिकेट सब फर्स्ट टाइम इनवाइट करबे प्रसाद कुमार बबी सर तो नाम की रिक्वेस्ट करबो अपन मने लिखि देबे प्रसाद कुमार बबी सर प्रेजेंटर नेक्स्ट हमरो किशोर चंद्र सिंह सर then Alok sir Alok Kumar sir next Rajendra Kumar Bolo sir next sir ready rohe Akash Kumar Sahu
को जो माने थिले एको नामडा जे सेठी लेखा ही नहीं माने दुई टी पेपर आपण दीदी जण पळे आसबे ठीक आपनकर जी मोदी सर रिक्वेस्ट होइबो जो माने टीम रे करचंदी पूरा टीम आसीबे नेक्स्ट होची रामेश्वर बारिक सर भी सर जो की कुटिया में मंदाकिनी करो मैडम एका केशव सर एकला टीम नेक्स्ट कैलाश चंद्र सेठी सर तापरे मनोज कुमार साहू सर प्रशांत कुमार बेहरा सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रेमानंद सर किशोर चंद्र सिंह सर आपकी प्रेजेंटर रही गेले की प्रेजेंटर के रही गेले पार्टिसिपेंट हम सेमती दे देबो आपण बोलावले नै जिवे पार्टिसिपेंट हम समय ऊपर डाकिया भाई सो समय आ जाई छै हमरो बेस 3 जो सर्टिफिकेट रही छी रूम देखिले पाइना सो मु डाकिया चाहिए फर्स्ट प्रशांत कुमार बेहरा सर खाली सार माने आसिले प्रेजेंट करे जणे मैडम ना एटा जेमती मैडम संख्या आखर बढ़िया दरकार कारण मैडम मान संख्या विद्यालय रो अधिक सर ठीक ना सर